get wealth and worldly things? No. Real success is to actually see Allah subhanahu wa ta'ala and His book. How? According to Hadith, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu says that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, on the day of Qiyamah, the men of the Quran will be told, read and read with good and clear pronunciation. Like you used to read when you were in the world, when you reach the last ayah, that will be your position. According to another hadith, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu says that wherever you recite 10 ayah in a night, it is not in amongst the neglectful. It takes only a few minutes to recite 10 ayah. By doing so, one is excluded from the list of neglectful. Dear audience, the other hadith that Abu Hurairah radiallahu anhu reports that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Allah Ta'ala never gives attention so much to anything as He does the voice of a Nabi reciting the Quran in a sweet tune. सामीन मुहतरम, तकरीर का खुलासा ये है कि हम अपनी ज़िंदगी कुरान करीम के मुताबिक गुजारें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वलक़द यस्सरना अल-कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान कर दिया ताकि कोई इसको याद रख सके। दूसरी जगह फरमाते हैं युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन, इसी कुरान के जरिए वो बहुत से लोगों को गुमराह भी करते हैं और बहुत से लोगों को राह भी दिखाते हैं। और मैं अपनी तकरीर का आखिरी इम्तिहान करूँगा।